हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू पास योर स्क्रीनिंग टेस्ट इन एसएसबी इंटरव्यू। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप अपने स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली गेट स्क्रीन्ड इन योर नेक्स्ट एसएसबी। सो हाउ टू गेट स्क्रीन्ड इन, पहले स्टार्ट करते हैं ओआईआर के साथ बिकॉज यू नो दैट इन एसएसबी स्क्रीनिंग टेस्ट देयर आर टू टेस्ट व्हिच आर कंडक्टेड. One is officers intelligence rating test or OIR test and the second is picture perception and description test or PPDT. इन दोनों टेस्ट के बारे में ही हम डिटेल में बात करेंगे। पहले आते हैं ओआईआर में। ओआईआर में आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं जो कि एक रिटन एग्जाम होता है और आपको ओएमआर आंसर शीट्स में क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क करना पड़ता है। नाउ it is not difficult to crack at all because through this test your basic IQ level is tested. So try to attempt all the questions because time is very limited and there is no negative marking. Now, coming to PPDT, there are three parts in PPDT. First is PPDT story writing, next is PPDT story narration, and third is PPDT group discussion. हम start करेंगे PPDT story writing में आपको क्या करना है ताकि आप स्क्रीन इन जो हो सको बहुत इजीली और अपना स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छा स्टोरी लिखना है विच हैज सम मीनिंग और पर्पस एंड विच शुड मैच विद द पिक्चर शोन टू। Secondly, don't give your hero's name as Ram or Shyam. Choose a good name for your hero. You can take help from your, from the name that your friend has got or your family member has got. Don't give your name as well, okay? And try to give a good name to the hero. Thirdly, you have to write a story which is quick action and is not based on future plans a lot, okay? Next, some of you give rewards at the end of your story just for social work to your hero. Now, please avoid this reward system and just give a happy ending with some twists and turns in the story to make it a bit more interesting. This also should get some interest and attention while reading or listening to your story, but you should be aware of that. But do not try to make a very interesting story like a cinema script or like writing a detective type thriller story or a Superman type story. Be normal, be practical, and be mature. Now, coming to the second part of PPDT, which is PPDT story narration, what are the things you should take care of in that part? When you are narrating the story, you have to be loud enough because it will show that you are confident. Look at everyone, all of your group members, not at the assessors, while narrating, and try to convey the message of your story instead of going deep into each and every details that you have mentioned in the story because you will not get much time. Okay, so to finish within 1 minute that will be given to you. ऑल्सो नरेशन के टाइम पे हो सकता है कि आप बीच में स्टक हो जाओ। डू नॉट वरी अबाउट दैट, ट्राई टू कम बैक टू द ऑन ट्रैक एज सून एज पॉसिबल। कीप योर स्टोरी सिंपल ड्यूरिंग नरेशन सो दैट यू डोंट गेट स्टक इन बिटवीन। अब आते हैं थर्ड पार्ट पीपीडीटी का जो है ग्रुप डिस्कशन पार्ट। ग्रुप डिस्कशन में टाइम पे आपको अपने स्टोरी से पॉइंट्स, अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करना है ग्रुप में एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ कॉमन ग्राउंड और अ कॉमन पॉइंट इन द स्टोरी where others are also agree and add it to the story because no one objects in something which they have also put in their story or which they have also observed. Secondly, convince others and also agree with others. This is important. Supporting your story is good, but if you try forcing your story on others, okay, then that is not good. Try to convince them as much as you can, but you cannot force your story on others. Go with the group. Also, sometimes the group discussion becomes a fish market situation, and it's not your fault because you are not getting involved in fish market or you are not the reason for creating fish market, but still you didn't get selected. Why? Because you didn't say a single word. So ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे रहोगे. Try your best to convince them, tell them not to argue, tell them to come back, try to give good points for your story, try to participate. If you just sit back and sit silently, then of course it is going to be a negative thing for you. If you keep quiet under such a situation, it's difficult for you to get selected, and people who are shouting, you'll see that they are getting selected because at least they were trying to do something to make a story. Okay, so do not sit silently and wait for the fish market situation to come down. You should not also contribute to the fish market situation, but you have to keep on trying. तो अगर आप ये सारी चीजों को ट्राई करते हैं अपने पीपीडीटी के टाइम पे या ओआईआर के टाइम पे, तो आप देखोगे बहुत इजीली आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रैक कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग स्क्रीन्ड इन एंड गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। ऐसे ही अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर लीजिए। वी ऑल्सो रेगुलरली
और कंडक्ट लाइव क्लासेस। हमारे अक्टूबर बैच की लाइव क्लासेस 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उससे पहले गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। If we have also provided lots of defense exam related courses inside our app, so download our app today and use the code warrior10 while you are getting enrolled to any of the course to get 10% discount on it. That is it from my side. I hope that the tips that we have discussed in this session will be useful for you. Let me know in the comment how it has been advantageous for you, what you did with the points, and how you utilize them in your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।